Morning students, in last lecture we have discussed how Newton's law is equivalent to Kepler's law. Now we assume Kepler's law hold and how Kepler's law is equivalent to Newton's law of gravitation. Here we assume all Kepler's law hold good and we prove that Newton's law is also a hold. ठीक है, मीन्स केपलर्स लॉ को हम लेके चलेंगे कि ये रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम जो है वो प्रूव करेंगे. फ्रॉम केपलर्स सेकंड लॉ, केपलर सेकंड लॉ क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट, मींस एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट. एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट मींस h/2 is constant. We know aerial velocity is h/2 and half r square d theta by dt means it is constant. If this is constant, then its derivative is 0. And if this value is 0 and if we multiply it by 1 by r, then it is also 0. And we observe that this is the formula for transverse component of acceleration. Means we can say transverse component of acceleration of particle is 0. It means particle has only radial acceleration towards the sun, directed towards the sun, which implies that force of attraction is central and is directed towards the sun. From Kepler's first law, the path of planet is elliptic about the sun. The equation of ellipse having pole at sun as focus is, ये formula ellipse का, अगर वो elliptic है motion, then path क्या है आपका? L by R is equal to 1 plus e cos theta, where e is less than 1. E is eccentricity, which is less than 1. If we put r is equal to 1 by u, then this formula becomes ul is equal to 1 plus e cos theta. Means u is equal to 1 by n into 1 plus e cos theta. Now differentiating with respect to theta, then du by d theta निकाला हमने, and second derivative of u with respect to theta. The force F per unit mass for central orbit is given by ये formula. हम आप लोग पढ़ चुके हो, ये फॉर्मूला हमने यूज किया. u की और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू थीटा की हमने यहाँ वैल्यू पुट की. सोल्व किया इसे तो हमारे पास आ गया h square by r square into 1 by l. Time period for an elliptic orbit, and this is equal to area of ellipse divided by rate of description of sectorial area, which is equal to ellipse का area pi ab divided by rate of description of sectorial area is h by 2. Now, according to Kepler's third law, t square is directly proportional to 2a cube. Means t square by a cube is constant. t square फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर ली है. तो हमारे पास आ गया 4 pi square by h square into some constant. This is again constant because d square by a, this is the length of semi-lattice rectum of the ellipse. Means L by h square is constant, or we can say h square by L is constant, say it is denoted by mu. From equation 2, F is equal to value क्या आ गई 1 by r square into h square by L, or we can say mu by r square. Then we get mf if we multiply this relation by m, because f is the central acceleration. On multiplying by m we get the central force, means mf is equal to mu by r square. It means this force of attraction between the sun and the planet is directly proportional to 1 by r square. This is the Newton's law of gravitation. It means Newton's law of gravitation follows from Kepler's law of planetary motion. Next article is motion under inverse square law. Show that path of a particle which is moving so that its acceleration is always directed towards a fixed point and is equal to mu by r square is a conic section, and to distinguish between the three cases that arise. इसमें हमें क्या दे रखा है? Acceleration is always directed towards a fixed point और किसके इक्वल है? mu by r square के. हमें क्या दिखाना है? पाथ क्या होगा? एक कॉनिक सेक्शन होगा. एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन थ्री केसेस दैट राइज, तीन केसेस मींस जो अराइज होंगे, जो पाथ आएगा उसके कारण वो हमने यहाँ डिस्कस करनी है. सेंट्रल एक्सेलरेशन हमने भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट हमने पैडल फॉर्म में यूज की. फिर हमने इसको क्या किया, ये आप काम पहले भी कर चुके हो, एक तरफ पी की टर्म्स एक तरफ आर के टर्म्स, फिर हमने उसको इंटीग्रेट किया. सेंट्रल ऑर्बिट में वी नो v इज इक्वल टू h बाई पी, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई p स्क्वायर. जस्ट हमने यहाँ वैल्यू पुट की तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू mu बाई r प्लस c1.
अब हम केसेस डिस्कस कर रहे हैं. इफ पाथ इज इलिप्टिक, पैराबोलिक और हाइपरबोलिक. इफ पाथ इज इलिप्टिक and if A and B are the length of semi-major and semi-minor axis, then refer to focus as pole. Pedal equation of the ellipse is b square by p square is equal to 2a by r minus 1. This is the pedal equation of ellipse. Now comparing 1 and 3. 1 and 3 को compare किया, then we get this relation. 3 में ये है और 1 में आपके पास है h square by p square is equal to 2 mu by r plus c. तो यहाँ से आप निकाल सकते हो h स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो और c1 कांस्टेंट आप निकाल सकते हो. नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2 वी गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू बाय r माइनस म्यू बाय a. अगर आप पैराबोलिक कंसिडर करते हो तो पैरेलल इक्वेशन पार्ट की क्या होगी, p स्क्वायर इज इक्वल टू er. Again you have to calculate h square and c1, then we get the value of v square which is equal to 2 mu by r. और हाइपरबोलिक पाथ के केस में जो रिलेशन था इलिप्टिक के केस में -1 था, ये क्या हो जाएगा +1. कि आपको ये पैरेलल इक्वेशंस हाइपरबोला की, पैराबोला की और इलिप्स की जो है आपको लर्न कर लिए इक्वेशंस जो है. ठीक है, यहाँ से भी आपको h और c1 निकालना है, फिर v स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है. आप यहाँ से देख रहे हो इलिप्टिक पाथ के लिए, पैराबोला के लिए और हाइपरबोला के लिए h स्क्वायर की क्या क्या वैल्यूज आई हैं आप देखो. दिस इज इक्वल टू म्यू एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ सेमीरेट्रस रेक्टम ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पाथ्स. सेकेंड क्रॉलरी अगर हम वेलोसिटी के लिए डिस्कस करते हैं तो क्या कह रहा है, इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स विद वेलोसिटी v इन एनी डायरेक्शन, then path is elliptic, parabolic or hyperbolic according as v square is less than equal to or greater than 2 mu by r. ठीक है, आप देख रहे हो कि इलिप्स के केस में जो वेलोसिटी है v स्क्वायर वो लेस देन है 2 mu by r के, पैराबोला के केस में इक्वल है और हाइपरबोला के केस में जो है वो ग्रेटर देन 2 mu by r है. If v1 is the velocity acquired by particle in falling from infinity to a distance, then v1 square is equal to -2 integration infinity to r ftr. हमने फॉर्मूला यूज किया वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय पार्टिकल इन फॉलिंग फ्रॉम इंफिनिटी का. ठीक है, जस्ट वैल्यू हमने फिर पुट कर दी. हम देख रहे हैं कि अगर पाथ हमारा इलिप्टिक है तो उस केस में इफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट क्या आ रहा है, लेस देन द वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, क्योंकि वेलोसिटी फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट क्या है 2 म्यू बाय r, और जो इलिप्स के लिए थी वो लेस देन दिस वैल्यू थी. पैराबोला के केस में इक्वल आई थी और हाइपरबोला के केस में वेलोसिटी एट एनी पॉइंट जो थी वो 2 म्यू बाय r से ग्रेटर थी. Second corollary, if v2 is velocity for description of circle of radius r, then v2 square by r is equal to mu by r square. ठीक है, तो v2 की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली which is equal to 1 by under root 2 velocity from infinity to distance r from the center of force. नेक्स्ट रिजल्ट है ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं इलिप्स की, ये आपको एज ए रिजल्ट जो ध्यान रखने आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे. Here we consider an ellipse with C as a center. S and S dash are two foci of the ellipse. Let P be any point on the ellipse. Then we draw a tangent LPL dash to the ellipse at point P. From the two foci draw, हमने क्या draw किया, perpendiculars draw किए SM and S dash N to the tangent LL dash. If 2A and 2B be the if the major and minor axis of the ellipse, then SM into S dash N किसके इक्वल है b स्क्वायर के, और उनका सम SP प्लस S डैश P किसके इक्वल है 2A के इक्वल. b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर, ये रिलेशन तो आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हो. एंड द एंगल SPL, दिस एंगल SPL इज इक्वल टू एंगल S डैश P L डैश के इक्वल. ओके स्टूडेंट्स, बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.